ओके, अब सोचो आप, जैसे फॉर्म्स है, उनका भी कुछ आइडिया होगा कि हमें इतने वर्कर्स चाहिए, हमें ये रेट ऑफ वेज दे सकते हैं। फिर जो भी इंडिविजुअल्स जा रहे होंगे लेबर फोर्स में या लेबर फोर्स में होंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए फर्म्स के साथ बार्गेन करना होगा। कैसे बार्गेन करना होगा कि आई वांट दिस मच वेज, इफ यू ऑफर मी दैट वेज देन आई विल वर्क, इफ यू डोंट ऑफर मी दैट वेज देन आई विल नॉट वर्क। Okay, so these type of concepts are used when there is some negotiation between an employer and the employee. Matlab, when you have a firm, so this is employer and you have a worker. In that case, it is the employee, and between these two, some contracts is to be signed for the employment of this person in this firm. Okay, so होता क्या है, इन जनरल आप अकेले नहीं होते हो, आप एक ग्रुप के साथ होते हो। ओके, सो वर्कर्स के लिए एक यूनियन रिप्रेजेंट करता है, दैट यू नो, वर्कर्स यूनियन, ट्रेड यूनियंस एंड सो ऑन। ठीक है, उसी तरह फर्म्स की भी यूनियन होती है। ठीक है, और यू कैन से ग्रुप ऑफ फर्म्स। आपने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत याद भी किया होगा, सारा भाई वाली कहानी, अंबालाल सारा भाई एंड वर्कर्स के बीच में जो मिल का प्रॉब्लम था, ठीक है, कॉटन मिल्स का, एंड द वर्कर्स दे वर फाइटिंग ओवर द हाइक इन द वेजेस। ओके, एंड गांधी जी केम टू नेगोशिएट विद दैट। सो उसमें कंसेप्ट क्या था कि जो भी अंबालाल साराभाई थे वो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ फर्म्स वर एक्टिंग फॉर द सेटिंग ऑफ वेजेस। किसके वेजेस? एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स सेट कर रहे हैं एम्प्लॉयज की। ठीक है, और ये एम्प्लॉयज कौन है? जो भी वर्कर्स हैं, वहां पे काम करने वाले जो मिल वर्कर्स थे। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ थिंग्स। सो यहां पे क्या है, जब ये दोनों के बीच में वेज का नेगोशिएशन होगा, सो देयर आर सम थ्योरीज, सो नेगोशिएशंस विल बी देयर। So what type of negotiations? Negotiations on wages. Okay. So just think, if you know that the person who is to be employed in your factory, he has some minimal requirement. Okay. So आप क्या करोगे? उतना पे करने की कोशिश करोगे. That is called reservation wage. So there is a concept called reservation wage. Why reservation wage? Because if you don't give wage up to this level, then the person will not work. Why? Because he is better off not participating in the negotiation. Why? Because reservation wage is something like, say, your unemployment insurance that you are getting. Okay, so suppose if you don't work, in that case जो बोलते हो ना बेरोजगारी भत्ता, so that बेरोजगारी भत्ता is your unemployment insurance. So unemployment insurance is your reservation wage, or you can say that this is the opportunity cost of working. अगर आप काम करने नहीं जा रहे हो तो आपके पास क्या है? आप क्या करोगे? कुछ अपना काम करोगे या पढ़ाई करोगे, और जो पढ़ाई करोगे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, एंड दैट वैल्यू इज योर रिजर्वेशन वेज। ठीक है, रिजर्वेशन वेज इज द मिनिमम वेज रिक्वायर्ड फॉर द वर्कर टू participate in the employment. अगर मान लो आपने माइंड में रखा
कि मेरे को 50,000 से कम की जॉब करनी ही नहीं है, इंटर्नशिप भी नहीं करनी है, in that case that 50,000 rupees that you have put as the price for your work, ठीक है, तो उतना आपको नहीं मिलेगा, you will not enter the market, तो वही तो आपका रिजर्वेशन वेज है. सो रिजर्वेशन वेज इज द मिनिमम वेज रिक्वायर्ड टू मेक यू वर्क. आपको मोटिवेट करने के लिए जो भी पैसे दिए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन वेज. ठीक है, रिजर्वेशन वेज क्या है? जो भी मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड है वर्कर को पार्टिसिपेट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड रिजर्वेशन वेज. अब चलो रिजर्वेशन वेज फॉर्म को पता चल गया. लेट्स रिप्रेजेंट दिस रिजर्वेशन वेज बाय से आर, और बेटर रिप्रेजेंट दिस एज डब्ल्यू मीन, मिनिमम ऑफ द वेज. ठीक है, वेज को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब मान लो हमारा वेज, दिस वेज, so I will write here. So there are two cases. One is when wage is less than wage minimum. In that case, the worker will not participate, will not work. अगर वेज ज्यादा मिलेगा, in that case the worker will work. मतलब जितना आपको चाहिए था उतना पैसा मिल जाए और उससे एक्स्ट्रा मिल जाए, तब तो आप खुशी खुशी जाओगे ना. आपका एक्सपेक्टेशन जो था वो 50,000 का था, बट द फर्म ऑफर्ड यू 60,000 रुपीज. इन दैट केस यू आर बेटर ऑफ वर्किंग. ओके, सो जो भी आप एक्सपेक्टेशन बोलते हो ना, एक्सपेक्टेड वेज, और योर एम्प्लॉयर आस्किंग इज दैट व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेड सैलरी. So that is what is talking about the reservation wage. ठीक है, अगर मान लो ये दोनों इक्वल है, in that case the worker is indifferent. ठीक है, indifferent का मतलब क्या है कि दोनों में कोई भी चूज कर लेगा. although ये indifferent वर्ड आपको माइक्रो के 1-2 क्लासेस के बाद ज्यादा क्लियर होंगे. ठीक है, the worker is indifferent between working and not working. नोट करना जरा, आई थिंक रीडेबल है आपके लिए. कोई डाउट है अभी तक तो बताओ. सो अब देखो, फॉर्म है, वर्कर है, रिजर्वेशन वेज दोनों को पता है. ठीक है, अब इसके आगे क्या होता है, दोनों क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं. तो नेगोशिएट करेंगे तो किसका पलड़ा भारी होगा, दैट मीन्स किसकी ज्यादा चलेगी, उस पर डिस्कस करते हैं. ओके, सो सपोज यू गॉट दैट हियर that wage should be greater than or equal to minimum wage, or you can say that wage should be greater than or equal to the wage which is the reservation wage. ठीक है, ये रिजर्वेशन वेज ही हमारा मिनिमम वेज था वहां पे. ठीक है, वो कंसेप्ट जो हमने बताया था. अब दिस वेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द रिजर्वेशन वेज, देन ओनली द वर्कर विल बी मोटिवेटेड टू वर्क और पार्टिसिपेट इन द लेबर फोर्स. ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वर्कर इंटर ही नहीं करेगा लेबर फोर्स. ठीक है, और जब लेबर फोर्स में इंटर नहीं करेगा तब तो फर्म कुछ भी कर ले, उसको ला ही नहीं सकता, उससे काम करवा ही नहीं सकता. ओके, सो दैट इज द थिंग. अब इनके बीच में नेगोशिएशन शुरू होगी, तो नेगोशिएशन होगी तो कैसे कहानी होगी, लेट्स सी. जैसे चल रहा है मीटिंग, एक तरफ फर्म्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक तरफ वर्कर्स के यूनियन वाले हैं. ठीक है, दोनों तरफ बात चल रही है. सो स्टेटमेंट आता है फर्म्स की तरफ से, तुम्हारे जैसे बहुत हैं. ठीक है, दैट मीन्स द वर्कर्स लाइक यू आर वेटिंग आउटसाइड माय ऑफिस टू ज्वाइन दिस कंपनी. ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द फर्म्स. कहने का मतलब तुम्हारे जैसे बहुत हैं, दैट मीन्स the unemployment rate
is very high in the market. In that case, I will not listen to you. I will hire them. मतलब जब भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा होगा तब जो बार्गेनिंग पावर होगा किसका ज्यादा होगा? फर्म्स का. ठीक है. यूनियन का क्या कंसेप्ट आता है? उन्होंने बोला ठीक है आपके पास है तो बहुत सारे, लेकिन यू कांट ट्रेन देम एज वी आर. मतलब we are a trained professionals. In that case, you can't have the freshers working like we do. ठीक है. तो उस केस में क्या होगा? इन्होंने क्या बोला कि ये जो नेचर ऑफ वर्क है ना, इनको स्किल्स चाहिए. तो स्किल चाहिए जो स्किल बाकी लोगों के पास नहीं है. इन दैट केस दे आर सेइंग दैट गिव अस हायर वेज. ओके. सो इनका क्या कहना है यूनियन का कि हमें ज्यादा वेज दो. क्यों? क्योंकि हम जो काम कर रहे हो तुम्हें बाहर नहीं मिलेगा. हम चले जाएंगे, तुम्हारी कंपनी बंद हो जाएगी. ठीक है, हम किसी और कंपनी के पास चले जाएंगे. सो दैट इज द नेगोशिएशन. सो यू गॉट दैट देयर वाज द बार्गेनिंग पावर थी. ठीक है. सो एक कंसेप्ट आया आपका बार्गेनिंग पावर का. सो बार्गेनिंग पावर के लिए दो टाइप की चीजें हुई. वन वाज द आर्ग्यूमेंट ऑफ नेचर ऑफ वर्क एंड द सेकेंड वाज बेस्ड ऑन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट. तो बार्गेनिंग पावर का दो कंडीशन आया. एक आया अनएम्प्लॉयमेंट रेट in the labor market, and another case was about the nature of work. So nature of work में याद रखना दो टाइप के होंगे. एक होगा स्किल सेट्स जो ज्यादा रिक्वायर होंगे. यू कैन से हाई स्किल्ड. आजकल कैटेगराइजेशन स्किल के बेसिस पे भी बहुत सारे हो गए हैं. हाईली स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, और यू कैन से वेरी वेरी हाई स्किल्ड. ठीक है. तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज होने लगी है, लेकिन आप मानकर चलोगे स्किल्ड और अनस्किल्ड की बात हो रही है. ठीक है. सो वी विल लिमिट आवरसेल्फ टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड. ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए बस. सो नेचर ऑफ वर्क में अब एक स्किल्ड वर्कफोर्स है, एक अनस्किल्ड वर्कफोर्स है. दो ग्रुप हो गए. ओके. सो सपोज स्किल्ड लेबर फोर्स इज say bureaucrats or say teachers or you can say professors or you can say CEOs of the companies. तो इनका relatively bargaining power ज्यादा होगा because whatever the skills they are having that is attained with a lot of experience. Yeah, that is achieved with a lot of हार्ड वर्क. ठीक है. मतलब इसके पीछे कुछ सिनारियोज रही है. इससे क्या होता है आपका स्किल सेट बढ़ता है. तो स्किल्ड अगर आप हो गए, इन दैट केस सपोज इफ अ कॉलेज हैज 10 ऑफ इट्स टीचर्स मूविंग आउट ऑफ द जॉब, इन दैट केस उस कॉलेज में बच्चों को पढ़ाएगा कौन? वो लोग एक्सपीरियंस टीचर थे, अच्छे टीचर्स थे, वेल एजुकेटेड थे, उनको नॉलेज अच्छी थी, टॉप इंस्टीट्यूट से पढ़े हुए थे इंडिया के. ठीक है. तो उनको पता था कि द वे दे आर टीचिंग दैट विल नॉट बी अचीव्ड बाय द कॉलेज स्टूडेंट. ठीक है. तो वो लोग निकल कर चले गए. तो कॉलेज के पास क्या ऑप्शन बचा? कॉलेज ने क्या किया? किसी रैंडम यूनिवर्सिटी से उठाना शुरू किया. रैंडम यूनिवर्सिटी से उठाना शुरू कर दिया और कॉलेज एजुकेशन को बर्बाद कर दिया. ठीक है. सो दीज आर द थिंग्स व्हेन दिस स्किल्ड वर्कफोर्स विल हैव हायर बार्गेनिंग पावर. तो यहां पे क्या हुआ कि कॉलेज के जो टीचर्स जा रहे थे उन्होंने दबाव बनाया, प्रोटेस्ट किया, बोला कि हमारी ये डिमांड्स है, हमारे प्रमोशंस का ये रिक्वायरमेंट था और हमने इसको फुलफिल किया, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. ठीक है. तो इस तरह की बार्गेनिंग में बातें होती है. अब मान लो यही प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती, तो जैसे ओपी जिंदल की बात कर लें, तो इसमें ज्यादा सुटेबल होगा एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट जॉब्स. ठीक है. क्योंकि आप नेचर ऑफ वर्क से जानते ही हो कि वहां पे ना गवर्नमेंट में ज्यादा प्रॉफिट मोटिव पे काम नहीं होता. ठीक है. और
गवर्नमेंट जॉब के लिए इंडिया में मोटिवेटेड लोग ज्यादा है रिलेटिवली, सो इट इज इजियर टू फाइंड द परफेक्ट मैच। ठीक है, रिलेटिवली इजियर है, बाकी फिर भी लूपहोल तो बच ही जाता है, फिर भी गैप रहता ही है। ठीक है, मेनली मेरा कहना यही था कि स्किल्ड वर्कफोर्स जो है उसको रिप्लेस करना आसान नहीं होता, इसी कारण से उनकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होती है। ठीक है, सो दैट इज द रीजन व्हाई सीईओज आर पेड हाईली, क्योंकि उनको पता है कैसे कंपनी को रन करना है। इफ दे नो दैट द कंपनी इज टू बी रन लाइक दिस एंड दिस थ्योरी विल वर्क इन द मार्केट fetching the higher revenues, then that person is very important for the firm. So firm क्या करेगी? The firm will say that whatever the demand of this person is, I will try to fulfill. Otherwise, my revenue will be so down. ठीक है, तो इस कारण से स्किल सेट वालों का बार्गेनिंग पावर ज्यादा होता है। हाई बार्गेनिंग पावर, हाई बीपी नहीं लिखूंगा, नहीं तो ब्लड प्रेशर समझोगे। अनस्किल्ड वर्कफोर्स का देखोगे, इनके जैसे बाहर में बहुत सारे हैं, तो इनको स्किल सेट की जरूरत नहीं है। आपने बुलाया, जैसे मान लो कि आपको ऑफिस में पानी पिलाने वाले को रखना है, सो आपका जो अभी का स्टाफ था उसने छोड़ दिया, सो यू केम अप विथ एन एडवर्टाइजमेंट और उससे कुछ लोग आए, तो उसमें से आपने एक को बता दिया कि ये काम है, पानी यहां से लाना है, ऐसे साफ करना है, बस क्लीन होना चाहिए, ऐसी चीजें थी। तो ये इतना लो स्किल्ड या अनस्किल्ड काम है कि रैंडम बंदे को ट्रेन करने में आपको मुश्किल से आधे घंटे लगेंगे, या बताने में आधे घंटे ही लगेंगे। इन दैट केस द पर्सन कैन बी रिप्लेस्ड इजिली, सो दैट वर्कर विल हैव लो बार्गेनिंग पावर। ठीक है, सो अनस्किल्ड वर्कफोर्स के पास क्या होगा? लो बार्गेनिंग पावर, वो ज्यादा सैलरी डिमांड कर ही नहीं सकता, जब घर गया तब उसको रिप्लेस कर दिया गया, ऐसा होता रहा है। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ वर्क इंपैक्टिंग द बार्गेनिंग पावर। ठीक है, सो दिस इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ वर्कर्स। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट का समझो। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होगा या लो होगा, सो जस्ट थिंक, if unemployment rate is very high in the labor market, in that case there are many people being unemployed. Okay, so whatever the employment category is required, that means whatever the skill set is the requirement of the firm will easily achieve that. क्यों? क्योंकि बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पूल है ना, तो उतने में से किसी को भी पिक करेगी और उनको आकर ट्रेन कर सकती है, क्योंकि ज्यादा लोग हैं तो उसमें से सही इंसान को निकालना आसान है। ठीक है, इसीलिए आप देखोगे कि जनरली जो भी टफ एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी वगैरह का, तो उसमें आपको लगेगा क्या यार कितने अच्छे जानते हैं ये लोग। ठीक है, दैट इज बिकॉज देयर इज अ हाई पूल ऑफ स्टूडेंट्स कंपीटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर पोस्ट, तो उस केस में कंपटीशन जब ज्यादा होगा तो अच्छे लोग निकल कर आएंगे। ओके, सो दैट इज द रीजन व्हाई द high unemployment rate means you can easily replace one able person. ठीक है, तो जब हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट होगा तो वर्कर्स क्या करेंगे? वर्कर्स का बार्गेनिंग पावर कम होगा, लो बीपी, वर्कर्स की बीपी लो होगी। ठीक है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होगा, इन दैट केस मोस्ट ऑफ द पीपल आर एम्प्लॉयड। इन दैट केस if I advertise something for some post, in that case I will receive a lesser number of applicants. जब applicant ही कम होंगे, then I can't figure out who is the best candidate, and it might be the scenario that the best candidates are not available in the market, so I have to accept some lower level of skill sets. Okay, और वो हमारे requirement को fulfill नहीं करता, so in that case whatever the employees I have to work with them. So यही इंडस्ट्री के कारण साथ भी होता है, जो भी वर्कर उनके साथ है उनको लेकर काम करना होगा। In that case the workers being in the market, that means they are working and they will ask for higher wages.
क्यों? क्योंकि दे हैव हायर बार्गेनिंग पावर इन टाइम्स ऑफ लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट. So low unemployment rate means most of the people are employed, so you can't get the suitable match, or you can say you can't replace one worker with the other because in the market the labor are not available. Okay, so that is the scenario. So here you will have high bargaining power. So this is from the perspective of workers. एंड द अपोजिट विल होल्ड फॉर द केस ऑफ फॉर्म्स. ठीक है, वो मैं नहीं लिखवा रहा, वो आप समझ सकते हो. ये मैंने वर्कर्स के पर्सपेक्टिव से बता दिया, तो फॉर्म्स के लिए उल्टा हो जाएगा. तो फॉर्म्स के लिए स्किल्ड वालों के पास उनका फॉर्म का बार्गेनिंग पावर कम होगा. अब सुंदर पिचई को तो आप कम पैसे नहीं दे सकते ना, तो हाई बार्गेनिंग पावर सुंदर पिचई का है, लेकिन उनको जो भी कंपनी हायर करना चाहती है दैट विल हैव लोअर बार्गेनिंग पावर. ठीक है, उसी तरह लो बार्गेनिंग पावर वर्कर का अनस्किल्ड में है, लेकिन फर्म्स के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर है. इसीलिए बहुत बार देखोगे कि मिनिमम वेज से भी कम देकर के फर्म काम चला रही होती है. ठीक है, क्या करेंगे? जो भी कंट्रैक्ट का मैंडेट है 8 आवर्स का, they will ask them to work only for 4 hours, or you can say only 6 hours. In that case the requirement is not fulfilled, so minimum wage law is not followed. Okay, so these are the scenarios that are used. तो अनस्किल्ड होगा तो फर्म के पास बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी. ओके, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट मार्केट में हाई है तो फर्म विल हैव हायर बार्गेनिंग पावर. If the unemployment rate is low, in that case, the firm will have low bargaining power. This is the scenario. Second is the case of efficiency wage. Efficiency का मतलब होता है how better you work. ठीक है, प्रोडक्टिविटी का सेंस में. मैं जो पढ़ा रहा आप लोगों को, अगर सबको अच्छे से समझ आते हैं, आपके एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स भी आते हैं, तो दोनों चीजें, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है, मार्क्स भी अच्छे हैं, इन दैट केस आई विल बी मोर इफिशिएंट. ठीक है, तो मेरी इफिशिएंसी कैसे मेजर कर रहे हो? आपके रिजल्ट के, आपके अंडरस्टैंडिंग से. दैट इज द प्रोडक्टिविटी लेवल ऑफ माई. सो माई प्रोडक्टिविटी लेवल विल बी रिफ्लेक्टेड एज द रिजल्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर मार्क्स. ठीक है, तो यही हमारा इफिशियंसी है. इफिशियंसी इज मेजर्ड फ्रॉम प्रोडक्टिविटी. और ये प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी है कि whatever the workers are contributing for the production. ठीक है, जब आउटपुट का प्रोडक्शन करोगे, इफ द प्रोडक्शन इज हायर, इन दैट केस यू विल से दैट द प्रोडक्टिविटी इज हायर. अगर आप पर यूनिट टाइम्स में देखें या पर यूनिट कॉस्ट के टर्म्स में देखें, अब पर यूनिट टाइम मतलब लिमिटेड टाइम जो आपका वर्क आवर है, या पर वर्कर के टर्म्स में देख सकते हैं. तो अगर पर वर्कर प्रोडक्टिविटी हाई है, इन दैट केस यू विल से इफिशियंसी इज हायर. सो इफिशियंसी बेस्ड आर्गुमेंट इज लाइक दैट कि इफ फर्म्स पे मोर देन द रिजर्वेशन वेज, ओके, so the worker is working in the market. So if the firm is paying very high, okay, यानी कि इफिशियंसी वेज पे कर रही है, तो उसमें क्या होगा? द वर्कर knows that at this wage rate I will not get any job other than this particular firm. तो इस फर्म के अलावा मेरे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है इस रेट पे, तो मेरे लिए बेटर यही है कि मैं इसी कंपनी में अच्छे से काम करूं, जितना एफर्ट लगा सकता हूं मैं यही लगाऊं, रात को मेरे फैमिली के साथ जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे सो जाऊं. ठीक है, सो दिस आर्ग्यूमेंट इज इफिशियंसी बेस्ड आर्ग्यूमेंट. तो इफिशियंसी बेस्ड थ्योरी क्या बोलती है कि फर्म्स पे हायर वेजेस देन रिक्वायर्ड. अब ये हायर वेजेस क्यों? बिकॉज फर्म्स हैव टू incur some cost in training of its workers.
जैसे भी आप देखते हो कुछ लोग प्लेसमेंट के बाद कंपनीज ज्वाइन करते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में होंगे, सीनियर्स में होंगे या फैमिली मेंबर्स में होंगे. इन दैट केस 1 or 2 years at some good set of skills, तो उस सेट ऑफ इंडिविजुअल्स को 1 या 2 साल फॉर्म्स ट्रेनिंग देती है. ओके, सो दैट पीरियड हैज सम कॉस्ट ऑफ द फॉर्म. तो अब मान लो ऐसे ऐसे हर बार उनको बार बार क्या करना पड़ता है, वर्कर्स को ट्रेनिंग देना पड़ता है. इन दैट केस द कॉस्ट ऑफ द फर्म विल बी हायर ऑन ट्रेनिंग ऑफ इट्स न्यू वर्कर्स. तो फर्म चाहेगी जो भी वर्कर्स उसकी कंपनी में है दे रिमेन देयर. सो द फर्म्स विल पे हायर वेजेस टू द स्किल्ड वर्कफोर्स जिनको ट्रेनिंग करनी पड़ रही है. ठीक है. सो इन दैट केस efficiency wage says that when the firm is paying higher wage, in that case the workers are not moving out of that firm. Why? Because they have lesser opportunities outside. Okay, एक एग्जांपल के तौर पे देखो, फोर्ड इंडस्ट्री का आपने सुना होगा, हेनरी फोर्ड की कहानी, that he raised the wage more than 100%. ठीक है, मतलब डबल से भी ज्यादा उन्होंने कर दिया था, अराउंड 120% के आसपास किया था ऑन एवरेज. ठीक है. सो द वर्कर्स हैड लोअर टर्नओवर रेट. ठीक है. अब ये टर्नओवर रेट ना हमारा टर्नओवर वाला बात नहीं है, यहाँ पे वर्कर्स के टर्नओवर की बात हो रही है. टर्नओवर का मतलब होता है छोड़कर भाग जाना. मतलब इफ आई हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ 10 पीपल, यहां ध्यान देना, if I have the requirement of 10 people and I had say 10 people and they left within 3 months, then I had another set of 10 people, 5 remained and 5 left after the other 9 months. That means 15 people left in 1 year. In that case the turnover rate would be 150 upon 100. ये कैसे आया अपॉन 100? मैंने वो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा ही कर दिया. इट शुड बी 15 अपॉन 10 बिकॉज 15 वर द पीपल लिविंग द जॉब एंड 10 वर द टोटल रिक्वायरमेंट. सो 15 अपॉन 10 इज 150%. दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट 150 अपॉन 100. ठीक है. सो चीजें क्या हुई टर्नओवर रेट में. सपोज you have 10 posts, 10 hired, say 9 left within 3 months, and again say 9 hired because we have the requirement of 10, and out of this say 6 left within the next 9 months. मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में 10 में से 9 छोड़ दिए जॉब, and for those 9 different posts you had the new hiring of 9 people, और इस 9 में से 6 लोग छोड़ दिए. In that case you had 3 plus 1 working with you, but turnover rate is how many people left the job in 1 year? 9 plus 6, that is 15. And what was the total number of posts? That was 10. So it is 15 upon 10. That is 150%. Although ये काम का नहीं है, आपको एग्जाम में ये भी नहीं पूछते हैं जनरली, लेकिन आप समझो इसको क्योंकि रीडिंग में मेंशन है. तो टर्नओवर रेट में क्या है, जब हाई टर्नओवर रेट रहेगा, इन दैट केस you have to train each set of workers that you are hiring. Then a lot of resource of the firm will go in the training of the workers. So the firm will give higher wage so that the firms don't move out of this firm. ठीक है. तो वही हेनरी फोर्ड ने किया, he raised the price, और इससे क्या हुआ, if you are paying very high price, sorry very high wage, in that case the labor union will not be that active, क्योंकि उनको पता है
उनकी चलेगी नहीं अब। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वर्कर्स विल नॉट लिसन टू देम। वर्कर्स आर बेटर ऑफ अर्निंग मोर वेजेस विथ हेनरी फोर्ड। ठीक है, तो वो हेनरी फोर्ड के साथ ही काम करेंगे ना, वो वेज वेज के लिए यूनियन की क्यों सुनेंगे? दैट वाज देयर। तो यहां से प्रोडक्शन काफी हाई हुई, यहीं से एफिशिएंसी वेज का कंसेप्ट आया। तो यहां भी बार्गेनिंग पावर जो होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नेचर ऑफ वर्क पे ही डिपेंड करेगा। इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वेरी हाई, इन दैट केस द रिप्लेसमेंट of the worker will be very easy। मतलब अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट वेरी हाई है तो आपको अच्छे स्किल सेट वाले लोग भी अवेलेबल होंगे मार्केट में। जैसे बहुत लोग का आपने सुना है यूएस से उनका ले ऑफ हुआ, दैट मीन्स द फर्म्स इन द यूएस लेट देम ऑफ। In that case, suppose they came to India, in that case, the Indian companies working here, they can hire those skilled professionals at a lower wage. So lower wage पे मिल जाएंगे वो। That means high unemployment rate had lower bargaining power of the workforce, but higher bargaining power of the firm. And same goes for the case of low unemployment as we had in the case of this case। ठीक है, सो इसको नोट डाउन कर लो। एक बार बताओ किसी को कोई डाउट है तो। आई होप आपने लिख लिया है। ठीक है, सो वी विल मूव टू हाउ दीज फोर्सेस ऑफ बार्गेनिंग पावर वर्क। ठीक है, सो बार्गेनिंग पावर जो बातें हो रही है तो वो कैसे काम करता है। ठीक है, लेट्स सी। सो with determination, so you could understand that wage is what the workers are getting, and this is the cost to firms. So firms will want wage should be low, okay, and workers want that wage should be high। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में टसल शुरू होगी। ठीक है, so they are negotiating on a table। Just think that they are sitting on a table together and the arguments are there। So from the original perspective that we were having, उसी से start करते हैं। So two set of people are there। So one is saying that unemployment rate is very high। That means who is saying? Firm बोल रही है कि unemployment rate very high है। In that case, I will give you lesser wage। Why? Because there are many unemployed people waiting for work। ठीक है, so I can easily get them and I can bring them for work। Okay, so that is the case। So the firm will say, I will give you lower wage, either you accept it or move out of the labor force, I am going to fire you। Okay, so that was one thing। That means the unemployment rate increase leads to fall in the wage। ठीक है, so as unemployment rate increases, your wage falls। That means negative relationship between unemployment rate and the wage rate। And again, if you are studying in DU and that too in economics honors, then you would say that, look, I have done economics honors from Delhi University and I have some merits। Okay, so do you know that I have a lot of opportunities in the job, and if you pay me at least 50,000, then only I will work for you। And that 50,000 was because of the government scholarship say you receive for
some higher education, either you go for MBA or you go for masters, ठीक है, मान लो कुछ ऐसा है और गवर्नमेंट आपको उतना स्कॉलरशिप दे रही है हर मंथ. So you would say that if the government is paying me that much amount just to study, so you should better pay more than that, then only I will work with you. Why would I think that after 5 years I would be the deputy chairman of your company? I don't care. I want the money at this moment. If you pay me more than 50,000, then I would accept that. If you don't pay, then I will go for my higher studies. ठीक है, that is the scenario. मतलब जो भी वेरिएबल्स कुछ सोशल सिक्योरिटी टाइप के हो रहे हैं या कोई भी इंश्योरेंस टाइप का हो रहा है, दैट इज अफेक्टिंग द वेज. एंड यहां पे क्या हुआ, इस टाइप के वेरिएबल है, एज इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, द वेज डिमांड विल बी हायर. ओके, दैट मीन्स as some representational variable is z, if z increases, in that case wage increases. Okay, so we have this scenario. And another scenario is when they are negotiating for the contract, they would be doing this for the coming time period. Okay, and that coming time period can be 1 month, 1 year, 5 years, anything, but it will always be in the future. तो जब फ्यूचर में होगा तो कुछ तो हमें हाइपोथेटिकल सिनेरियो सोचना होगा कि आगे क्या होने वाली है. That means when firms and workers are bargaining, they have to view some future variables. मतलब फ्यूचर में क्या होने वाला है. So what is the variable of interest there? That is price. So फ्यूचर में what would be the price? ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि workers are not caring about the wage they receive. They care about how much commodity they can buy from the wage they earn. Microeconomics की क्लास X1, X2 will be required. ठीक है, वही बंडल आपको क्या करेगा, आपको बताएगा आपको यूटिलिटी कितना मिलने वाली है, आपको सेटिस्फेक्शन कितना मिलने वाला है. आपका मनी इनकम मैटर नहीं करता. ठीक है, सो यू विल से दैट वर्कर्स विल ऑलवेज से दैट आई वांट माय nominal income being higher. Okay, so just think, if I am able to buy say 5 kilo of rice, ठीक है, एक दिन की मेरी कमाई से, in that case if the price of rice increases, okay, so I would ask my employer to raise my salary. Why? Because I will say that look, in the market you might be going to buy rice and the price of rice has increased, and you know that earlier I used to buy 5 kg of rice with a day salary, but now I am able to buy only 4 kg and 700 grams. So I want the increase in my wage. That wage increase is the nominal wage. And what is the real wage? Real wage is in terms of commodities, in terms of goods. So real wage and nominal wage. So nominal is what you term in the case of numerical values only. That means only numbers. ठीक है, real means in terms of commodities. So nominal wage means, say we are representing wage by W, so whatever the wage you have, that is represented by W. आपको 1 घंटे के 2000 रुपये मिलेंगे, that is the wage rate. ठीक है, और ये कौन सा वेज रेट है, दैट इज नॉमिनल वेज. ठीक है, अब यहां पे रियल क्या होगा, अब इस 2000 रुपए को लेकर आप मार्केट में गए, द प्राइस ऑफ राइस इज 100 रुपीज, इन दैट केस 2000 डिवाइडेड बाई 100 रुपीज विल गिव यू द रियल वेज. रियल वेज कैसे, 2000 डिवाइडेड बाई, दैट इज 2000 इज द वेज, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100, this gives you 20 kg of rice.
कमोडिटी के टर्म्स में आ गया ना, तो दिस इज द रियल वेज, ठीक है। सो व्हाट इज द रियल वेज? वेज अपॉन प्राइस। दैट मीन्स किसी भी नॉमिनल वेरिएबल को आप रियल में कन्वर्ट करते हो, यू डिवाइड दैट बाय प्राइस। सो नॉमिनल बाय प्राइस इज द रियल, ठीक है। सो ये याद रखना। तो नॉमिनल वेज अगर W है तो रियल वेज क्या होगा? W बाई P. So we are concerned about real wage. So worker is saying this, and the firms will say, okay, that is your point. Now listen to my point. If you are going with this scenario, I will come up with another scenario that, see, the government has asked us to reduce the price of the good. Okay. So if the price of the good is to be reduced, in that case, the firms will not be able to charge higher price for their commodities. Okay. So if they can't charge higher price, that means their profits will come down. So they would say that, look, I am not able to charge higher prices. So do one thing, let's deal with lower wages. Okay. So you would remain employed, and I will have some cost cutting that will not limit my investment. Okay. So in the long run, if the government lifts the ban out, in that case, we will see what better we can go for. ठीक है. So इस तरह की बातें हो रही थी फॉर्म्स और वर्कर्स के बीच में. तो फॉर्म्स ने बोला कि लेट्स एग्री फॉर लोअर वेज एट दिस मोमेंट. क्यों? क्योंकि मैं हायर प्राइस चार्ज नहीं कर सकता. इन दैट केस द फर्म वाज लुकिंग एट द वेज एज इट्स कॉस्ट. जो वेज है उसका कॉस्ट है, क्योंकि वो उसको पे करना है. किसको? वर्कर्स को. ठीक है. अब ये जो प्राइस मार्केट में चार्ज कर रहा है, उस प्राइस की जो वैल्यू है, समझ रहे हो, वो कैसे निकलेगी? जो भी कमोडिटी उसकी प्रोडक्ट हो जाएगी, उस प्रोडक्शन के बाद मार्केट में लोग बाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. ठीक है. सो उससे कुछ प्राइस आएगा, और प्राइस से उसने वेज देना है. अगर मान लो मार्केट में कुछ ऐसा हो कि मार्केट में प्राइस बढ़ जाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन से. सो इफ द प्राइस ऑफ द आउटपुट that is produced by the firm is increased. Opposite scenario ले रहे हैं पहले के कंपैरिजन में. So if the price is increased, in that case the firm will say, or you can say the firm will accept the conditions of the worker, saying that yes, don't worry, I will raise your wage, I have also raised my price. ठीक है. So ऐसे सोचो, अगर सारे फॉर्म्स ऐसे करने लगे, इन दैट केस द प्राइस विल बी हायर. ठीक है. और इसके बाद क्या होगा? रियल वेज पहले के बराबर ही रह जाएगा, बट देयर वुड बी इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी. ठीक है. और यही होता है. सो एज द प्राइस इंक्रीजेस, द फर्म will be able to raise its wage. If the price is lower in the market, then the firm knows that it has higher burden of the wage. So the firm will say to the workers that let's reduce some wage. Okay, so that is the discussion between firm and the workers. ठीक है. तो ये सारी बातें हैं. कहने का मतलब ये था, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता नॉमिनल वेज क्या है. That means firms and workers are not dealing in nominal wage. They are always thinking in terms of real wage. Okay. So what was the thing? That real wage is what matters to firms and workers. And I said that they are looking into future, and that variable was price. ठीक है. अब worker will get the salary and then go to the market. Okay.
सो ये क्रेडिट कार्ड वाला जमाना नहीं चल रहा मान लो, ठीक है। सो न्यू क्लासिकल थ्योरी 1960s में दिया गया था, सो उस समय की बातें हो रही है। सो जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि in future, or you can say once the worker gets the salary, then only he can go to the market to buy some goods. So whatever the price the worker is going to face in the coming time, that will be deciding the real ways that the worker has attained. And जब फ्यूचर में क्या प्राइस होगा ये तो आज देख ही नहीं सकते हो ना, सो यू हैव टू गेस, ओके। दैट मीन्स the workers will estimate the price level in the future, or you can say the workers will have some expectations about the price in the future. That means the workers will deal with expected price. Workers will have expected price during negotiations. So you would say, why only workers? Why not firms? Because firms are going to set the price. So firms will know the price of the commodity. If firms know the price of the commodity, then they need not act. So they know the real price. Okay. So they know that this is the price tag that I will be using on my commodity. But workers, they are not charging the price now. So whatever the price they will face in the market, they have to expect. Okay. So firms decide the price, but workers, they perceive the price for the future. ठीक है, तो यही एक्सपेक्टेड प्राइस को डिनोट करोगे पीई से, ठीक है। So just suppose if the expected price, if the expected price by the firms is higher in the future, so the worker will say that look, in the future the price is going to be high, so do one thing, give me higher wage, otherwise I will not get the real wage that I am thinking to get, or you can say I am not getting that as per the real ways from my reservation ways thing. Okay, so whatever the participation decision will happen because of reservation ways thing, ठीक है। तो उसके कारण उसने क्या बोला वर्कर ने कि in the future my expectation is that the price will be higher, so give me higher wage. Okay, and whenever the future scenario will be something like there would be drop in the price level, then the workers will say ki okay, if you are saying that wage will be reduced, then okay, I am happy with 10% cut. यही रीजन है कि ड्यूरिंग वार्स द वर्कर्स आर गिविंग वार अलाउंसेस, ठीक है, जिसमें कि आप बोलते हो कि जब भी वार आता है तो क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है इकोनॉमी में। जब इन्फ्लेशन आएगा, सो वर्कर्स आर गोइंग टू फेस हायर प्राइसेस इन द मार्केट, सो दे विल आस्क देयर एम्प्लॉयर्स दैट गिव मी सम हायर वेज, ठीक है। तो क्या होगा, वो बोलेगा ठीक है, जब तक लड़ाई चल रही है तब तक दे देते हैं। सो एज वार्स प्रोग्रेसेस द वेज इज इंक्रीजिंग, एंड वंस द वार स्टॉप्स द वेज विल come to the level that it has been in the pre-war scenario, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा ना वार के बाद, वार के बाद फिर से प्रोडक्शन सारे अपने पीक पे आ जाएंगे, तो वो सिनारियो होती है, ठीक है। ऑल्दो एडजस्टमेंट धीरे धीरे होता है, उस पर हम नहीं जाएंगे। मेरा कहना यही था कि जब एक्सपेक्टेड प्राइस ज्यादा होगा तो वर्कर्स वेज ज्यादा डिमांड करेंगे, सीधे शब्दों में। जब एक्सपेक्टेड प्राइस कम होगा तो वर्कर्स एक्सेप्ट कर लेंगे कम प्राइस। दैट मीन्स whenever the workers and firms negotiate, they agreed on a wage based on these three factors, ठीक है, 1, 2 and 3।
और ये कैसे रहा, जब एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ेगा तो आपका वेज बढ़ेगा, सो पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, इसके अलावा न्यू क्लासिकल ने बोला फंक्शन ऑफ यू एंड जेड। सो इफ यू लुक एट दिस रिलेशन, एज expected price increases so wage increases, direct relation है। and what about this is a function। ठीक है, so इस केस में क्या है, you could see that as unemployment rate increases the wage falls, negative relationship। so यहां पे negative relationship होगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट से और वेज रेट का। सो जेड जो है, जेड के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। अब ये जेड क्या है, यू क्या है, पी क्या है, सो डब्ल्यू इज वेज, पीई इज एक्सपेक्टेड प्राइस, यू इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट, what is z, z is catch all variables, catch all variables means all the other variables except unemployment rate and the expected price that affects the wage। ठीक है, जैसे कि आपका सोशल सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी है। सोशल सिक्योरिटी जैसे कि जो आप देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, तो ये सारे वही स्कीम्स है। आप काम नहीं भी करोगे तो भी कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ खाने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सिनारियो है सोशल सिक्योरिटी वाले, ये कैचुअल वेरिएबल से डिनोट हो रहे हैं। और उस केस में जब जे इंक्रीज होगा, जेड इंक्रीज होगा, इन दैट केस यू विल हैव योर इंक्रीज इन वेज। ठीक है, सो व्हाट इज द कैचुअल वेरिएबल, कैच ऑल वेरिएबल is the representation of all the other variables except the unemployment rate and expected price that can affect the wage। ठीक है, like unemployment insurance। ठीक है, तो ये आपके बुक में भी मेंशन थी, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, जो समझाने वाला था मैंने समझा दिया। इसको एक बार नोट डाउन कर लो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि इसके आगे से हम लोग स्टार्ट करेंगे वेज सेटिंग, प्राइस सेटिंग, which will build the ideas of neoclassical thesis। ठीक है, जिसको बोलते हैं neoclassical synthesis। ठीक है, या neoclassical school of thoughts। ठीक है, लेकिन आपको नाम से मतलब नहीं है, आपको समझने से मतलब है। तो इसको नोट डाउन करो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस इन दिस लेक्चर। वी विल मीट अगेन टुमारो होपफुली फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी आपके कॉलेजेस चालू नहीं है, तब तक कुछ टॉपिक्स हम लोग पहले कर लेते हैं, फिर कॉलेज चालू होगा, उसके बाद वी विल शिफ्ट टू वीकेंड्स। ठीक है, so that we have some ample time to cover the syllabus। if we have to discuss some extra things, then also we will be okay with our time। ठीक है, so take a note of it। if you have any doubt, just let me know। take care, bye bye।